The format first, beginning balance, payment, principal, interest, ending balance. Mm, In the third year, will we still pay, how will we pay 1,000? That will be a anyways, we are repaying principal repayments, right? So why your payment is 1248? What is given in the question? Our interest rate is 10%. Yes, but whether they say what is the payment done in as per the question? $1,000. Yes, so why you are putting $1,200? Uh, so the principal would be the payment minus interest. Yes. But our balance is now 486. So So something wrong you have done. Let me just check. Year one ending balance is coming 1735 as per book. So let me see what you have done. What is interest 249? Perfect. So what is your ending balance formula? Can you show it to me? Your ending balance has to be 1002. Always your see ये हम come back to F column. How ending balance is calculated? It's always principal. Beginning balance. Come to sheet number 49. Somewhere we have written all those formulas. What is the F2 column? beginning minus principal. So can you change that formula? Beginning minus principal.
Yes, second year का ending balance भी change करो. See, ultimately, your ending balance of the last year has to be exactly zero. If it is not happening, then something is wrong in the formula calculations. Perfect. Your ending balance is zero. That means all your calculations are working fine. So this is how you record the prepare the amortization schedule. Now, very important, your M column. This is a few very important words I'm going to give you. आपको आज help करेंगे, bonds में help करेंगे, lease में help करेंगे. So interest का जो column है that always goes into the P&L. So it doesn't matter that what is the value you are paying. So for example, in this example, you have a 0% rate of interest. Still, you are going to record the interest expense. Now, what are the entries? Let's write down the entry. So number one, when you take the loan, the entry is cash account debited. Now you record everything as a present value and not the actual value because the loan is not taken at a fair market value rate. So cash account debited 2486, which is your beginning balance column. Discount on note account debited, because this is the benefit you are taking from the market. You are not effectively paying any interest. So you are taking a benefit from the market. So it's your asset. So another debit, discount on notes payable Why, account debited. how are we not paying any interest? So you are paying zero stated interest, right? You are just paying $1,000 of payment. This is the mathematical interest you have calculated as per your present value formula. But as per the contract copy you have received from your supplier or a banker, it's a 0% interest. So you have got an advantage, right? This is a mathematical interest. $1,000 payment you have split into a two parts, principal and interest. But as per the legal contract between you and a bank, the interest is 0%. Bank is never going to ask you interest. They will only ask you for $1,000 direct payment only. What's the entry? So entry is debit, discount on notes payable account debited. So this is the benefit portion, which is a total of 3000 minus 2486. I think it will be 514. Two notes payable credit 3000, which is your contractual obligation. Now every year you are going to record a payment and an interest. So you're on your, I'm telling you the entry now. In 2486 is the value of 3000 in 3 years. Yes, it's a present value of 3000 of which you are paying 1000 every year. So present value of 1000 annuity for 3 years today, it's 2486. And discounts on notes payable, how do I interpret this? So W- this w- is the advantage you are getting from the market. So ideal scenario, you should have received a full $3,000 and you should be paying a 10% interest on this loan, but you are not paying any interest. So technically your worth of the loan today is only 2486.
So this is the 514 discount you got because you have a 0% market, 0% interest rate compared to a market interest rate. Now, what will happen every year? You are going to record the interest expense and you are going to close off your notes payable obligation. So now every year, write down the entry every year what we are going to do. Now, interest expense will be debited for you every year and you have to take the value from your amortization schedule. So write down interest expense account debited. Notes payable account debited. Now, notes payable will be debited from the principal portion of the repayment every year, which is 751 for year one to cash $1,000. सेम एंट्री को रिपीट करो ईयर टू ईयर थ्री में. All right, these are just a referential entry. Now, before we jump on to any other thing, एक बार बैकर ओपन करो आपका and there is a example number 7. उसको एक बार quickly mathematically compute करो. Just see whether you are able to solve that or not. It's a same line पे question है where you have to do a present value calculation, amortization schedule बनाओ और उसकी entries लिखो. एक बार हो जाए तो बताओ. एग्जाम्पल नंबर 7.
Mm, there Comfort. is no payment, so what would I do? Let me just go through. Company purchased a machine and issues her and no interest due in 5 years, 10%. So make it zero, no payments. Show it What do zero. we do? But we won't pay the interest. Interest will always be there. Interest is not going to be cash paid. Interest is a P&L item. So interest will always be there. Keep following your formula. How your ending balance is there. So it's a beginning balance. Now see in this particular example, you have to now tweak the things little bit. You are देखो आप हर एक चीज को आप अगर वैसे देखोगे कि व्हाट आर रूल वाइज स्टेप 1 स्टेप 2 वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी. नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल your beginning balance is 6210. Now since you are not making any principal repayment, your interest gets accumulated in your ending balance. So your ending balance is going to be 6210 plus 621. So your ending balance is going to be 6831 now, because आप कोई भी रीपेमेंट नहीं कर रहे हो. Why is ending balance increasing? सी जनरली प्रिंट आप जो पेमेंट करते हो ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. अगर आप एंडिंग बैलेंस का टेक्निकली फॉर्मूला निकालोगे ना तो द फॉर्मूला सेज बिगिनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल कंपोनेंट. सो दैट इज माइनस पेमेंट कंपोनेंट. सो दैट इज इफेक्टिवली योर एंडिंग बैलेंस. बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला दिया है विच सेज दैट एंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू बिगिनिंग बैलेंस माइनस अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ रीपेमेंट. अगर आप ये फॉर्मूला को ट्विक करोगे, यह फॉर्मूला इज बिगिनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट. अब जाओ आपके पुराने वाले एग्जांपल पे जो जे कॉलम में शेड्यूल शेड्यूल है. अगर आप वहां पर सेम सेम टाइप जे कॉलम मैंने बोला, यू हैव अ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ 2486, add the interest component and reduce the payment entirely. That will also give you the ending balance. एक बार मैथमेटिक्स करो. your beginning balance plus interest minus payment. दिस शुड टाई विथ योर 1734. ठीक है. सो ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है. मैंने आपको जो एन कॉलम में फॉर्मूला दिया है दैट इज बिगिनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट. सो मैंने कान उल्टा पकड़ा है, यहाँ पर मैंने कान दूसरे तरीके से पकड़ा है. सो यू हैव टू बी नाउ स्मार्ट कि आपका एंडिंग बैलेंस होता क्या है. अगर कोई चीज का प्रिंसिपल कंपोनेंट रिपे नहीं होता तो इट ऑलवेज अक्यूमुलेट्स इन द एंडिंग बैलेंस. या तो आप ये याद रखो, या तो जो मैंने आपको दो फॉर्मूला दिए हैं, अब दोनों फॉर्मूला याद रखो, दोनों फॉर्मूला का नंबर सेम होना चाहिए. So it's a beginning balance plus interest minus payment. ठीक है. So let's use second method now. Beginning balance plus interest minus payment. इसको कॉपी करो 5 साल में, फिर आप जर्नल एंट्री बनाओ when your answer is done. बिगिनिंग बैलेंस का रेफरेंस चेंज करो. इट विल बी अ क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर्स. हर एक सेल में चेंज करते जाओ. Now last year you are making a principal repayment of 10,000. So 10,000 को आप माइनस कर सकते हो, but you are making after 5 year. So it's not before ending balance. It's the beginning of year 6. आपका 10,000 का जो balance है वो 10,000 को आप repay करोगे. Now prepare the journal entry for this. What is the first year entry? Instead So of cash you it, are getting it would machine. be it would be another year. Not would be another year. Ending 31st December को आप रात को पेमेंट कर रहे हो. So no other year, but after the interest is charged, you are making a repayment of entire $10,000. चलिए एंट्री बनाइए. लेफ्ट साइड में रेफरेंस एंट्री है, सेम रेफरेंस के साथ बनाते जाइए. यू आर नॉट टेकिंग कैश, यू आर गेटिंग मशीन.
How would I interpret this debit on the notes payable? Discount on notes payable. आपको एक मशीन मिला, वो मशीन का वैल्यू 10,000 है आफ्टर 5 इयर्स। आपको आज मशीन मिल रहा है तो मशीन का वैल्यू है 6210। आप 5 साल के बाद इसका पेमेंट कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द 6,200 राइट नाउ, आपको वो सॉरी इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ 10,000 का पेमेंट आज, यू आर गेटिंग अ वैल्यू एट अ 6210, सो यू आर टेकिंग अ डिस्काउंट ऑफ 3790 बिकॉज आपको पेमेंट टर्म्स 5 साल का मिल चुका है, जो चीज आप आज यूटिलाइज करना शुरू कर रहे हो। नाउ एंट्री केयरफुली लिखना। लास्ट एग्जांपल जो है वहां पर हमने नेट एंट्री लिखा हुआ था, क्योंकि वहां पर पेमेंट इन्वॉल्व था। यहाँ पर नेट एंट्री नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको 2 स्टेप का एंट्री बनाना पड़ेगा। तो कहना इसे जो आपका लास्ट रो नंबर 22 में एंट्री है, अगर मैं उसको दो तरीके से लिखूं, सबसे पहले मैं लिखूं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 248 टू डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 248, and then notes payable debit 1000 to cash 1000, will it work? I आपका didn't get what you said. 22 23 24 में जो एंट्री है, अगर वो एंट्री को मैं दो एंट्रीज में स्प्लिट कर दूं, तो फर्स्ट एंट्री आई एम मेकिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 248 टू डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 248। आपका जो 514 है विच इज रो नंबर 19, उसको भी तो आपको क्लोज करना है ना। सो एक एंट्री लिखो रो नंबर 22 में, एक और एंट्री मैं आपको दे रहा हूँ। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है, बट आपका जो अभी एंट्री है दैट इज अ नेट एंट्री। अब मैं आपको स्प्लिट करके बताता हूँ एंट्री। सो 22 नंबर की रो में एक और एंट्री लिखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 248 टू डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 248 टू क्रेडिट, क्रेडिट करना है। और एक एंट्री बनेगा नोट्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 1000, डेबिट नोट्स पेबल 1000, क्रेडिट कैश 1000। सो जो आपकी बाजू में एंट्री है ये एग्जैक्टली द सेम एंट्री है, पर हमने क्या किया, 22 और 20 सॉरी क्रेडिट डिस्काउंट और नोट्स पेएबल एंड डेबिट नोट्स पेएबल को हमने मर्ज करके पहले एंट्री लिखी थी नेट 751 की। अगर आप 1000 माइनस 248 करोगे इट विल बी योर 751। सो बाजू में जो हमने एंट्री लिखी थी वो नेट इफेक्ट था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 248, नोट्स पेएबल डेबिट 751 टू कैश 1000। अभी जो हमने एंट्री लिखी वो स्टेप बाय स्टेप एंट्री लिखी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट ऑन नोट्स पेएबल डेबिट, फिर नोट्स पेएबल डेबिट 1000 एंड क्रेडिट कैश। क्योंकि वहां पर पेमेंट था तो नेट एंट्री करना इट वाज मोर इजी। यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली दो लाइन की जर्नल एंट्रीज बनेगी, विच इज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 621 टू क्रेडिट डिस्काउंट ऑन नोट्स पेएबल 621, सेकेंड ईयर 683, थर्ड ईयर 751, फोर्थ ईयर 826 एंड फिफ्थ ईयर 909। बाय Why मेकिंग दिस एंट्री, हाँ, why do we have to credit discounts on notes payable? आपने पहली एंट्री में डेबिट किया 3790 से, उसको बंद कैसे करोगे अकाउंट को? एक अकाउंटिंग का सिंपल फंडा है ना जो हमने फार वन में सीखा था, जो अकाउंट ओपन होते हैं वो अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो वो जो डिस्काउंट और नोट्स पेबल डेबिट है वो क्लोज कैसे करोगे आप? Hello? हाँ जी बोलिए। आप कट ऑफ हो गए थे। I ओके, couldn't. आई एम सेइंग इन फार वन वी अंडरस्टैंड कि जो भी अकाउंट हम ओपन करते हैं वो अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ता है। तो आपने फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट और नोट्स पेबल को ओपन किया विथ 3790 विथ अ डेबिट एंट्री, आपको उसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना 3790 को। तो वो अकाउंट आप क्लोज कैसे करोगे अगर चलो आपने अभी एंट्री नहीं डाला डिस्काउंट और नोट्स पेबल का?
तो उसको आप क्लोज कैसे करोगे अकाउंट को? सो दैट इज बीन अमोर्टाइज्ड विद इंटरेस्ट कंपोनेंट ईयर ऑन ईयर। ये 3790 है क्या? आपका 5 साल का इंटरेस्ट का टोटल है 3790। But we didn't close in the first. यू डिड क्लोज। आपका 751 जो है, तीनों का टोटल करो। प्रिंसिपल रीपेमेंट की जो एंट्री है फर्स्ट एग्जांपल में, 751 प्लस 826 प्लस 909 का टोटल करो। आपने नेट एंट्री की है, दैट इज आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। ये क्या है? 2487। 2487 का ब्रेकअप क्या है? नोट्स पेबल क्रेडिट 3000। लुक एट रो नंबर 20। नोट्स पेबल क्रेडिट 3000 माइनस डिस्काउंट्स ऑन नोट्स पेबल डेबिट 514। सो यू हैव अ नेट नोट्स पेबल ऑफ 2486। एक तरीका है आप नेट देखो, दूसरा तरीका है आप ग्रॉस देखो। अगर आपको नेट नहीं समझ में आता है तो अब आपका जो राइट हैंड साइड पे एंट्री लिखा है वो देखो। हमने क्या किया? एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 248 टू क्रेडिट डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 248। फिर नोट्स पेबल को 1000 से किया हमने। एक काम करो, टी और यू कॉलम में ईयर 2 ईयर 3 के अमाउंट्स भी डालो। ठीक है, अब डिस्काउंट और नोट्स पेबल का ईयर 1 के एंड पे क्या बैलेंस है, ईयर 2 के एंड पे और ईयर 3 के एंड पे, वो बताओ। सो आपने डेबिट किया 514 से, देन यू हैव अ 248 का क्रेडिट एंट्री। तो कितना बैलेंस बचा ईयर 1 पे? 514 minus 248. राइट। सेकेंड ईयर -173 फर्दर माइनस करो। थर्ड ईयर 91 फर्दर माइनस करो। इफेक्टिवली वो जीरो हो जाएगा। और नोट्स पेबल का आपका बैलेंस था 3000, आपने 1000 ईच ईयर डेबिट किया, दैट मीन्स 3000 का बैलेंस भी जीरो आउट हो गया। तो सेम एंट्री हम यहाँ पर लगा रहे हैं। डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 621, क्रेडिट डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 621, सेकेंड ईयर 683, थर्ड ईयर 751 एंड सो ऑन। और आप कुछ भी प्रिंसिपल रीपे नहीं कर रहे हो, सो यू डोंट हैव द सेकेंड एंट्री विच इज नोट्स पेबल टू कैश का एंट्री नहीं हो रहा है ये एग्जांपल में, बिकॉज आप ईयर ऑन ईयर कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हो। How are we closing discounts on notes payable by notes payable account? नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन। That- For the debit or discounts on notes payable we have made, how are we closing it by debiting notes payable? कहाँ डेबिट कर रहे हो नोट्स पेबल को? नोट्स पेबल इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल इज अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। सो आप यहाँ पर एंट्री क्या कर रहे हो? पहली दो लाइन पे सिर्फ फोकस करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल क्रेडिट। आपकी पहली एंट्री में डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल डेबिट है, तो यहाँ पर आप पांचों एंट्री में उसको क्रेडिट करके जीरो कर रहे हो। उसके बाद आपका नोट्स पेबल फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है, तो जब आप रीपेमेंट करोगे 10,000 का, तब आप नोट्स पेबल को डेबिट करोगे तो कैश क्रेडिट करोगे। So repeat what did you say? एंट्रीज लिखो 5 साल की, ये एग्जाम्पल की।
कैन आई से ये इंटरेस्ट की वजह से आपका डिस्काउंट ऑफ नोट्स पेबल 0 हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 5? यस, नो? Yes. अभी एंड ऑफ द ईयर 5 क्या करोगे आप? 10,000 का रीपेमेंट करोगे तो योर एंट्री विल बी नोट्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000, क्योंकि आप ईयर 5 के एंड पे एक ही रीपेमेंट कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गई एंट्री सारी? What would we do if we have to give interest? व्हाट विल यू हैव टू डू इफ यू आर सपोज टू गिव द इंटरेस्ट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, होमवर्क में आप खुद सॉल्व करना। जहाँ आई थिंक हमने दोनों एग्जांपल ऐसे किए हैं जहां पर फ्री इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहां पर आपका इंटरेस्ट कम रहेगा। सो यू फिगर इट आउट, अगर अदरवाइज हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं पर ही है। आपका अमोर्टाइजेशन टेबल आपके लिए मेन है और एंट्रीज आपके लिए मेन है, सब कुछ उधर ही छुपा हुआ है। सो आई ड्राफ्ट एग्जाम्पल, आई गिव इट टू यू। हम लोग मंडे सॉल्व करेंगे, टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल, सो नाउ वी विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे मॉर्निंग। Okay. चलिए, ओके, थैंक यू।